Hello students, how are you? On the last class, we have already discussed about the chapter. The name of the chapter is Natural Vegetation and Life, Wildlife. Okay? This chapter from your book Geography, and the number of this chapter is 5th. Clear? On that time, we had already discussed about the flora. Okay, now you look at what is the natural vegetation. Clear? Natural vegetations क्या है? So in your surrounding you found that so many trees, so many grasses, so many birds. Okay, that's all included into natural vegetations. Clear? वो सारी चीजें जो हैं वो कुदरत के ही पार्ट में आती हैं. So here this natural vegetations we divided into two parts. The one is flora, okay, and the second one is fauna. So here flora denote to the plants, clear, and fauna, that word denote to the animals. So in flora we already discussed about the here relief, climate, means in what type of climate we found if we found the tropical hottest climate, so the vegetation of that place is different from the coldest place of anywhere. Clear? Means जो vegetation है वो एक गर्म एरिया में different होगी compared than to cool area. Clear? And it's depend on their temperature, that region temperatures. Clear? So here now the types of vegetations. Here there are 5 types of vegetation. So the first one is tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, then tropical thorn forest and scrubs, and then montane forest, and then mangrove forest. Clear? So these all 5 types of vegetation which included into flora. Okay? These 5 included in flora. And the next one. Now today we read about the next vegetations or next things, that is wildlife. Okay, wild means that is related to jungle. ठीक है? अब forest बाकी जंगल जहाँ पर हम वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगल में रहती है लाइफ, मतलब किसकी लाइफ? फॉर एनिमल्स लाइफ. क्लियर? So wildlife means here this one is related to fauna. Clear? On the same way as like flora, India also rich in its what? Fauna. Clear? Flora and fauna. In fauna here included animals species. Okay? Species. Now here approximately 90,000 animal species. And the country has about 2,000 species of birds. Clear? And they constitute 13% of the world totals. There are 2,546 species of fish, which account of nearly 12% of the world stock. It also shares between 5 and 8% of the world's amphibian, reptiles and mammals. These are the variety of animals. Clear? Means fauna word included for the animals. So in our country India have approximately, I think it's more than 1 lakh animals species. Okay? Means बहुत तरह की varieties हैं, बहुत तरह के animals हैं. अब animals में तो बहुत कुछ include हो जाता है. Okay? जिसमें
clear the name of this elephant? It's a very biggest animal. Okay, so elephant are the most majestic animals among the mammals, and it is the mammals. Okay, so they are found in the hot wet forest of Assam. Clear? So that's animal elephant that we found in the hot wet forest. hot wet forest means जहाँ पर गर्मी भी है और means wet humid मतलब वो गर्म भी है और wet भी है मतलब गीला है, and that is so that's why we found elephants in their Assam, Karnataka and Kerala, because the climate of these three states have hot wet. Okay, and there is hot wet forest. Clear? We know that, हम सब जानते हैं कि अब जो एनिमल्स हैं वो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, और फॉरेस्ट की जो वेजिटेशन है वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट डिफरेंट. क्लियर? सो ऑन द सेम वे जो ये एनिमल्स हैं, ठीक है, जो विच वन इंक्लूडेड इन फोना, वो भी अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट डिफरेंट. क्लियर? सो दैट्स वाई एलिफेंट मतलब कि जो एलिफेंट है उसको ग्रो अप होने के लिए या उसको एलिफेंट जो एनिमल्स है उसके लिए बेस्ट और सुटेबल जो क्लाइमेट है दैट इज द हॉट वेट. सो in the state of Assam, Karnataka and Kerala we found hot wet climate. So that's why here is elephant. Okay, on the same way one-horned dinosaurs are the other animals, okay, which live in swampy and marshy lands of Assam and West Bengal. So one-horned dinosaurs, okay, जो मतलब एक सींग का, जिसे हम आई थिंक गैंडा कहते हैं, सो वो भी कहाँ पर है? असम एंड वेस्ट बंगाल. ओके, arid area of the run of Kutch means run of Kutch, arid area means सूखा, driest. ठीक है, the driest area of the run of Kutch and the Thar deserts. Where is Thar deserts? In which states? It is in Rajasthan. Okay, the best part of Rajasthan, there we found this desert. That the name of that desert is Thar desert. So are the habitat. Habitat means एक ऐसी जगह जहाँ पर animals का घर. You in simple way you say that कि home for animals. Animals के लिए जो घर है that's place called habitat for wild ass and camels respectively. Okay, so here the run of Kutch, which one is in Gujarat, and the Thar desert, which one in Rajasthan. So there are a habitat for wild as you know that, and the camels respectively. On the same way here, Indian bison, nilgai means blue bull, okay, chosinga, four-horn, antelope, gazelles, and different species of deer are some other animals found in India. It is also has several species of monkey. Okay, so here the means ये जितने भी animals हैं इनको हम protect जो करते हैं, इनकी protection के लिए एक act बना था. Okay, उस act को कहा गया था Wildlife Protection Act. And that act was implemented in 1972 in India. Remember this, in India. Okay, so in India here Wildlife Protection Act which was implemented in 1972. Clear? So what is the now here question arise? What is the Wildlife Protection Act and why we need this protection? Because देखो persons जो है वो अपनी needs को, human beings अपनी needs को फुलफिल करने के लिए जो हम अपने ये नेचुरल वेजिटेशन पार्ट है वो वाइल्ड लाइफ है इनको डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है, सो मतलब कि पर्सन ऐसा ना करे, ह्यूमन बीइंग ऐसा
करे तो वहां पर एक एक्ट बनता है। एक्ट की हेल्प से अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमें जो है वो पनिशमेंट मिल सकती है, बिकॉज वो जो चीज जो वो काम हम कर रहे हैं टू फुलफिल आवर नीड्स एंड विच वन इज नॉट गुड, सो दैट्स अकॉर्डिंग टू लॉ इज नॉट ए गुड थिंग। ओके, मतलब हम कोई क्राइम कर रहे हैं, so that's why we suffer from some punishment. So here in 1972 here the Wildlife Protection Act was implemented. Okay, so India is the only country in world that has both tigers and lions. Okay, India is the only country in the world, okay, that has both tigers and lions. The natural habitat of the Indian lions is the Gir forest in Gujarat. Gir is the famous forest. Okay, now Gir is the name of a, means it's a wildlife sanctuary. आप लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में सुन रखा होगा, या नेशनल पार्क के बारे में सुन रखा होगा, या वर्ल्ड सेंचुरीज के बारे में सुन रखा होगा। ये क्या चीजें हैं? ये दीज आर द नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट्स हैं और कुछ जो हैं वो मैन मेड हैबिटेट भी हैं, जिसमें हमने मतलब कि एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए उसको ह्यूमन मेड एक हैबिटेट, मतलब उन एनिमल्स को वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया है। और कुछ नेचुरल्स हैं, क्लियर? तो वो है एक गिर इज द नेम, ओके, गिर इज द नेम ऑफ ए, it's a means wildlife sanctuaries, it's a name of that, which one is in Gujarat. Here we protect the tigers and lion. Okay, so tigers where we found in the forest of Madhya Pradesh. As we know कि हमारे पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो कहाँ पर है? That is in मध्य प्रदेश। But according to density means बहुत थोड़ी सी जगह में ज्यादा जंगल जो है that is in अरुणाचल प्रदेश। But on the quantity way here that is in Madhya Pradesh and the Sundarban of West Bengal and the Himalaya region. Okay, so next one is the leopard. Two are the member of the cat family. They are important among animals of breed. Here, so here now Himalaya hardy range of animals which survive in extreme cold Ladakh freezing high altitude are a home of yak. Now here listen, Ladakh is the most driest area. Okay, because it is a high altitude, बहुत हाइट में है ये, बहुत ऊपर है ये, तो वो कोल्डेस्ट तो है बट ड्राई। ओके, सो वहां पर कौन सा एनिमल सरवाइव कर सकता है? दैट इज द याक। ओके, तो वहां पर एलिफेंट सरवाइव नहीं कर सकता, वहां का जो क्लाइमेट है दैट इज नॉट गुड फॉर एलिफेंट्स, दैट इज ओनली गुड फॉर याक। सो वहां पर जो है याक ही सरवाइव कर सकता है, और जो हमें याक है वो कहाँ पे मिलेगा? लद्दाख में। On the same way, the wild sheep and the young Tictian wild as furthermore the ibex, deer, snow leopard and very rare red panda are found in the certain pockets. So these means ऐसे कि हमारे forest different है, on the same way animals को भी डिफरेंट क्लाइमेट में जो उनका हैबिटेट है, उनका जो घर है वो भी डिफरेंट वे में होता है। ओके, नाउ हियर दिस इज द मैप। ओके, एंड यू एवरीवन look at here. Now here India has some wildlife reserves. वाइल्ड रिजर्व्स मींस कि जो हमारे एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट बना था, हम लोगों ने उन लोगों को एक आर्टिफिशियल क्लाइमेट दिया, एक आर्टिफिशियल हैबिटेट दिया, और कुछ ऐसे हैं जो नेचुरल एरिया थे उनको हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कन्वर्ट कर दिया। ओके, कि वहां पर हमें वही चीज
These are the name. Here, where is a circle like this, okay, this and this. These are the wildlife sanctuaries. Means यहाँ पर उन sanctuaries के ये नाम है. Okay. Then bird sanctuary and then national park. Okay. I think India has about 30 national parks. Clear? कि इंडिया के पास 30 से ज्यादा नेशनल पार्क हैं पूरे इंडिया में. ओके. सो हियर, so this one, the first one is the Darchigam. Okay. So Darchigam is a wildlife sanctuary and it is in Jammu and Kashmir. Then Rajaji, Corbett, Dudhwa, Shivpuri, Chandraprabha, clear, Rajgiri, and this one, this triangle. Okay, these are the national park. So the here, look at here, this is for lion. So यहाँ पर where is it? It is in Gujarat. So Gir forest here. Okay, on the same way here, Kaziranga. It is also national park here. So here Bandipur, this is also national park. Okay. Cordoba, Kana, Simplipa. Okay, these are the national park. Okay, Sanjay Gandhi, these are the national park. Okay, so here are some national parks, some wildlife sanctuaries, some bird sanctuaries. Clear? So you everyone look at this map carefully from your book and learn the name of all these national parks, bird sanctuaries and wildlife sanctuaries and where it is. Okay, you also know about that. Clear? So these are the some wildlife reserve. Reserves मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो जगह है यहाँ पर हमने एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर कर रखा है. मीन्स वो वहाँ पर एनिमल्स को कोई भी मतलब लोग पहले शिकार करते थे ना एनिमल्स वगैरह का, यहाँ पर इनकी जरूरत इसीलिए पड़ी ताकि जो पब्लिक जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इनका मीन्स जो एनिमल्स हैं जो हमें वाइल्ड लाइफ है उसको लॉस ना पहुंचाए, कोई उसको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो वहाँ पर. सो दैट्स व्हाई वी organize all these wildlife sanctuaries, bird sanctuaries and national park. Clear? So this one, I hope this one is clear to you. And the next here we have bird life in India is colorful. Peacock, pheasants, duck, parakeets, crane and pigeons are some of the birds inhabiting the forests and wetlands of the country. Then we have selected our crops from a biodiverse environments. Okay, from the reserve of the edible plants, we also experiment and selected many medicinal plants. Okay, medicinal plants just like neem, tulsi. Okay, these type of plants are called medicinal plants. मतलब कि कुछ plants ऐसे भी हैं जो जिनसे हमें दवाइयाँ मिलती हैं. So these animals were selected from large stocks provided by the nature as milk animals. They also provided as drought power transportations meat eggs. Clear? So the fish provide nutritive food. Many insects help in pollinations of crops and fruit trees and exert biological control on such insects which are harmful. Okay, every species okay, so hence conservation is essential. Clear? Conservation means इनको protect करना because we have so many animals just like कुछ animals जो है कुछ हमको क्या बहुत तरह से चीजें प्रोवाइड करवाते हैं
that provide eggs. Okay, then some animals provide us meat. Clear? And some insects, that is the pollination of crop and fruit. So these all are included in the biodiversity environment. कि हमारे environment में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे सिल्क वॉर्म है, that is also the useful insect. Why? मीन्स जो हमारी सिल्क है, जो सिल्क एक क्लोथ है, वो जो हमें मिलता है, दैट इज फ्रॉम सिल्क फॉर्म. क्लियर? सो ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत ही, दीज ऑल आर इसेंशियल टू अस. ओके, सो as has been mentioned earlier, due to the excessive exploitations of the plants and animals resources by human beings, the ecosystem has been disturbed. Okay, मीन्स जो हमारा इकोसिस्टम है, अगर हम इन चीज़ों से छेड़छाड़ करेंगे अपने फ्लोरा और फौना से, मीन्स फॉरेस्ट से, एनिमल से, इन सब चीज़ों से अगर हम छेड़छाड़ करते हैं, so that's our ecosystem has been disturbed and about 1,300 plant species are endangered and 20 species are extinct. मीन्स कि इसकी वजह से जो है हमारे बहुत से एनिमल्स जो हैं वो किस में आ जाते हैं, खतरे में आ जाते हैं, मतलब उनके लिए some problems आ जाती हैं. So on the same way, the main causes for this major threat to nature are hunting by greedy hunters for commercial purpose. Okay, means कुछ लोग जो हैं वो ये शिकार वगैरह क्यों करते हैं? हंटर, ग्रीडी हंटर्स मीन्स लालची, मीन्स फॉर द कमर्शियल पर्पस, मतलब कि उनकी जैसे कुछ एनिमल्स को हम मारते हैं, उनकी स्किन को निकालते हैं. अब एलिफेंट्स को मारते हैं तो उनके वो जो आइवरी टीथ्स होते हैं, उनके जो दांत होते हैं, उनकी जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस है, तो उनको बेच कर वो पैसा कमाते हैं. दैट इज फॉर कमर्शियल पर्पस. Pollutions due to the chemical and industrial waste, acid deposit, introduction of alien species and reckless cutting of the forest to bring land under cultivation and inhabitants are also responsible for the imbalance. Imbalance means जो nature को हम imbalance कर रहे हैं, क्योंकि because these all are the natural vegetation. अगर हम अपनी nature को छेड़ेंगे तो वो हमें response में या वापसी में क्या देगी? डिजास्टर देगी. रिमेंबर दिस. अगर हम अपनी नेचर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं तो वो हमें उसके बदले में एक अच्छा क्लाइमेट प्रोवाइड करवाएगी. ठीक है, और अगर हम उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स राइज होती हैं, जो कि हम आजकल फेस कर भी रहे हैं. तो ये हमारी ही कहीं ना कहीं मिस्टेक है, मतलब ह्यूमन बीइंग की मिस्टेक्स है जो नेचर को इम्बैलेंस कर रही है. So now to protect the flora and fauna of the country, the government has taken many steps. And what are that steps? These steps are there. Now 14 biosphere reserves have been set up. Not 14, I think now above than 30. Okay. So 4 out of these are the Sundarbans in the West Bengal, Nanda Devi in Uttarakhand, the Gulf of Mannar in Tamil Nadu, and the Nilgiri have been included in the World Network of Biosphere Reserves. Okay, means these are the name of that Biosphere Reserves, मतलब जिसमें हमने अपने फ्लोरा और फौना मीन्स बोथ थिंग्स, दोनों बोथ आर द कंटेम्पररी टू ईच अदर. क्लियर? क्योंकि अगर हमारे पास फ्लोरा है वहीं पर फौना हो सकता है, जहाँ पर मतलब फॉरेस्ट है वहीं पर एनिमल्स हो सकते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई, सो दिस वी कॉल बायोस्फीयर रिजर्व्स. क्लियर? सो गवर्नमेंट टेक ऑल दिस स्टेप. क्लियर? सो हियर दीज आर द दैट्स 14 बायोस्फीयर और बायो रिजर्व्स. सो द फर्स्ट वन इज सुंदरबन, Gulf of Mannar, the Nilgiri, Nanda Devi, Norfolk, Great Nicobar, Manas. Okay, all these Simplipal, Diwan, Digru, so these are the that 14 bioreserves. So here is one thing more, that is the migratory birds. Migratory birds क्या होते हैं? Means जो कुछ मतलब बर्ड हैं, कुछ पंछी हैं, कुछ पक्षी हैं जो टाइम टू टाइम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. ठीक है,
और वो सीजन के अकॉर्डिंगली ही वहां पर आते हैं। क्लियर? उसको हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो क्रेन है, साइबेरियन क्रेन्स हैं, ये सारी जो बर्ड्स हैं ये एक टाइम के बाद किसी दूसरे एरिया में चली जाती है, माइग्रेट होती है। ओके, सो द नेक्स्ट, financial and technical assistance is provided to many biotechnical gardens by the government since 1992 के बाद। Then after Project Tiger, Project Rhino, Project Great Indian Bustard and many other eco-development projects have been introduced. Then after 89 National Park, 490 wildlife sanctuaries and geological gardens are set up to take care of natural heritage. Then all of us must realize the importance of natural ecosystem for our own survival. Now here is an advice to all. Now all of us, means we all, must realize the importance of natural ecosystem for our own survival, and it is possible if this indiscriminate destruction of natural environment is put to an immediate end. Okay, so मतलब ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है नेचुरल वेजिटेशन। इट्स मीन्स इट्स अ मेजर थिंग फॉर आवर लाइफ। सो